it's a long story. I was born pre-partition, and at that time it was Hindustan, not Bharat or Pakistan. It was the United India. So I was born in Lahore, and pre-partition. I was very young. I remember कि छोटे से थे हम जब suddenly ये दंगे होने लगे, and my father held me, and I can just remember कि bodies were lying. और काफ़ी वहाँ से जब हम चले हैं और आर्मी के ट्रक में हम तरन तारन अमृतसर आए हैं, so I still remember vaguely that there were lots of bloodshed bodies lying there. और वो अपने जैसे आपने भाग मिल्खा में देखा होगा उसी तरह का केसेस कुछ थे. Suddenly from well-to-do family अच्छे खासे चलते हुए हम suddenly we became paupers, refugees, and that's how the journey started. From there we came to Punjab, and then finally to Delhi, from Delhi to Bombay, and the education was between Bombay and Delhi. Then हमारे ज़माने में क्या होता था, जब आदमी बच्चा ज़रा बड़ा होने लगता था, he would graduate the school and all that, तो उसके बाद parents decide करते थे कि which line to choose for. आजकल जो है, that's a different case. They have lot of venues, they have IT background, they have computerized avenues, and a whole lot of things are very, very open. हमारे ज़माने में बहुत कम selected 5-7 प्रोफेशंस होते थे. डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, प्रोफेसर बन जा, आर्मी में भर्ती हो जा, बस यही होता था. So my parents started telling me and started encouraging me to become an engineer, and so I was I was sent to Jamshedpur, Tata Nagar, to do the engineering. So I did my mechanical engineering from there. Then I got employed in Tata's itself, Telco, or Telco se Tata Engineering and Locomotive Company. From there only I happened to shift to Bombay. I mean, shift means transfer to Bombay, Tata head office. और यहाँ पर obviously फिर my brother Paintel had already joined the industry. So he was little popular. So he is 4 years younger than me in age, but 4 years senior to me in films. Then he said कि यार तू ये तेरा काम नहीं है. I know you are an actor, और तू शुरू से तेरा शौक था कि या आर्मी में जा या फौज में जा या फिर एक्टिंग कर. तो I am also there. So why don't you join film industry? Hence I joined film industry. I did my internship as apprentice, as assistant director to very famous directors then, Mr. H.S. Ravel and his son Rahul Ravel. Then for some time Raj Kapoor, and then finally to B.R. Chopra and Ravi Chopra. In between, because मेरा पैशन बड़ा था फौज में भर्ती होने का, तो 62 के वॉर में, चाइना एंड पाकिस्तान का वॉर जब हुआ था 62 एंड 65 में, so there was an emergency recruitment in the army. तो हम कोई 60 स्टूडेंट चले गए थे और हमने आर्मी में ज्वाइन कर ली. So I've seen 2 wars also at that time. So, and I was in artillery, gunner थे हम. And incidentally my entire family was in the army. They held ranks up to general. Most of them retired as general Paintels, and they were also shocked. I never expressed my feeling for Forge that much. And why did I join? I said I just felt like joining, and we 60 students joined. फिर वो क्या होता है कि there is an option of 7 by 8 years in army. अगर आप emergency में join करते हैं तो 7 years you have to be strictly there with the army. After that 8 years में आपको वो बुला सकते हैं.
So tenure is 15 years. Those next 8 years, if there is some kind of emergency and they want us, we can be called anytime for anything. And so I joined, and then slowly and steadily I used to act also in the films. I used to be a model in advertisement, and I used to do documentaries. I used to do Darshan ke plays. Then in 77 I directed my first film for Doordarshan. That was with Benjamin Gilani and my brother and Asrani. It was called Ser Pe Sawa Ser. That was 20 minutes, first short film I directed in 1977. So that's how the journey started. Then I didn't leave anything unturned where cinema is concerned, because I consider myself to be totally cinema ka student. So जहाँ तक सिनेमा का सवाल था, whether it was music, or it was editing, or it was writing, or it was direction, or it was script writing, I took interest in every part, and I tried to mature myself and learn whatever I could. But that is the background. And then incidentally I became a writer also. I am a lyrics writer. All the top musicians, I mean the singers, have sung for me also, and still I am writing for films and television. तो lyrics भी लिखने का शौक था, तो वो भी साथ में होता रहा. That's how the journey started. You see, at that time नई नई आज़ादी मिली थी इंडिया को, अंग्रेज गए थे, तो there was more feeling towards patriotism. Today patriotism is just a word which is uttered by leaders. जो नेता हैं वही बात करते हैं patriotism की, वो भी artificial patriotism. They don't mean it. तो वो बात ऐसी है कि but in our times it was such that we knew the value. हमने लाशें देखी थी, हमने bloodshed देखा था, हमने tragedies देखी थी घरों में. कईयों के सुहाग उजड़ गए थे, कईयों के बेटे मर गए थे, कईयों के क्या कुछ नहीं हुआ था. तो उस वक्त वो इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट था. Today's world is more of a practical, and today the same influence has come to our cinema also, because cinema में भी आप देखिएगा जो emotions पहले होते थे, अब emotions cut off हो गए हैं. Now there is nothing, like very few, sometimes you find that emotions are winning over action. But mostly अभी क्या हो गया, people have become very superfluous. They are not that much sentimental, they are not emotional. तो वो बात अंदर की निकल के नहीं आती जो कभी कभी उस दौरान आती थी. अब उस समय की कोई भी पिक्चर देख लीजिए उसमें, and that is only because the makers had the same background what I have described to you. So they had gone through all these problems. They knew the heights, the problems of how to contain the society, and society should repay them. So at that time the makers had one thing in mind, and that is कि we have to give something to society. कोई social message हमको देना है, which is not so today. Today it's not more of a make believe. It is more of a, मतलब जो practical हो रहा है, अगर मार काट हो रही है तो हो रही है, दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन emotions थोड़े से missing. Unfortunately, that is the only thing which I find very difficult. No, Raj Kapoor family came from there. Dilip Kumar was also from Peshawar. Mr. Devanand was a colleague of my father who was also in film industry in Lahore. So Devanand was there. Om Prakash was there. There are lots of people who were from that side of Punjab, you know, Lahore. So that side of Punjab had some of the greatest of actors, which were given to Indian film industry, and thinkers. The Chopra clan I joined in the year 1978 when they were making Burning Train.
So Burning Train के दौरान I joined them as actor as well as because I played engineer who was junior to Vinod Khanna. So I was as an actor, but then I joined him as assistant director. So I was assisting him also. Then I took over as BR Ads chief. That means there was a company called BR Ads, sister concern of BR Films, which used to make commercials. So I joined them as the head of commercial making department. From there, I started doing casting for them, and slowly from there on, we in '84, I remember '84, we were given okay by Doordarshan. So we took 4.5 years till we came on air. Actually, 4.5 years to decide what to do in Mahabharata. So it took us a lot of research, lot of hard work, lot of meditation for it. So, and we had read lots of literature regarding Mahabharata, and that's how it was. About Shakuni, you see, I used to take interview. I must have taken about 3,500 auditions. And there was a Filmalia studio which was constantly booked for me and my cameraman to take interviews. And it took us 9 to 10 months to only take these auditions. तो वो 10 महीने में मैंने ये सब एक्टर्स चुने. उसमें हर कैरेक्टर के लिए मैं दो तीन फाइनल सजेशंस अपने बॉसेस के लिए रख देता था कि दिस इज व्हाट आई फील कि दिस guy is good for this guy is good for this guy is good for this girl is good for this role. उसमें also came the Shakuni. तो शकुनी का ऐसा हुआ कि सबका तो सिलेक्ट कर लिया था. डॉक्टर राही मासूम रजा, मिस्टर बी आर चोपड़ा, मिस्टर रवि चोपड़ा ने वो तो सिलेक्ट कर लिए थे, बाकी सब. लेकिन शकुनी आई वॉज वेरी टेंस्ड. मैंने कहा अभी रोल आने वाला है, एकदम सामने जवान हो गए हैं बच्चे और बच्चे पैदा हो गए हैं, तो अभी तो कम से कम शकुनी का तो बताइए आप. एंड दे वर रिलक्टेंट, दे डिडंट टेल मी. देन फाइनली दे टोल्ड मी नो यू आर डूइंग शकुनी. आई सेड हाउ. So before that, fortunate for me, I had done a British character called Metcalf, who came as a resident resident general of British company in the rule of Bahadur Shah Zafar. So we were making a serial called Bahadur Shah Zafar, जिसमें अशोक कुमार दादा मुनि was Bahadur Shah Zafar. उसके सामने ये अंग्रेज का रोल था मेरा, which was Metcalf, and that's how from that role I got graduated to Shakuni. That's how it was. There is definitely background to how I created that character, because no one knows whether he was langda, limp था कि नहीं था. That was my own creation as an actor. हुआ क्या था कि I was very young, must be in 7th, 8th और 5th क्लास में, 4th या 5th क्लास में था और 7-8 साल का बच्चा था. तो आई यूज टू गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म्स, एंड वी हैड पेंटल फार्म्स इन नैनीताल तराई, बाजपुर. अगर आपने सुना होगा तो बाजपुर में हमारी ज़मीनें थी. तो हमारे पिताजी ग्रैंडफादर वॉज अ वेरी बिग स्कॉलर, एंड he used to command 3 universities ke, you know, he used to be like checking the papers from three universities in philosophy and English and all those subjects. तो उनके साथ जब मैं सैर करने निकलता था तो I used to ask कि पिताजी ये अच्छे बुरे आदमी में फ़र्क क्या होता है, ये अच्छा आदमी क्या होता है, बुरा आदमी. तो that's how I came to know that he told me, सनी ऐसा है कि अच्छा आदमी is like a good magnet which attracts, and bad man is the जो magnet distract करता है. So you should try to be a good magnet which should attract people towards you, and that is एक उनसे ये सीखा मैंने. उसके बाद मैंने पूछा अच्छा फिजिकली कुछ फ़र्क होता है, आप बताइए मुझे, फिजिकली कुछ ऐसा होता है कि अच्छा या बुरा पहचान है. बोलते हाँ,
जो बुरा आदमी होता है उसमें एक आध डिफेक्ट भगवान दे देता है, बट इंटेलिजेंट बहुत होता है, श्रूड बहुत होता है। वो यहाँ तो लंगड़ा होता है, यहाँ टुंडला होता है, यहाँ गर्दन छोटी होती है, यहाँ काना होता है। तो आई टोल्ड माई डायरेक्टर्स मिस्टर बी आर चोपड़ा, आई सेड ऐसा मैंने ग्रैंडफादर से सुना था, कैन आई मेक हिम लिम्प? एंड सो दे एग्रीड टू इट एंड दैट्स हाउ दैट बिकेम। उससे पहले जिन्होंने भी किया था, बड़े बड़े एक्टरों ने किया है, शकुनी, जीवन साहब ने किया था, प्राण साहब ने, एवरीबॉडी लाइक इट सो मच के एंड साउथ के भी कुछ लोगों ने शकुनी किया था। मेरे को खास एप्रिसिएशन आई थी वहाँ से भी कि वी हैड नेवर थॉट कि ये ऐसा भी करेक्टर हो सकता है, बिकॉज सो फार नो बडी हैड मेड हिम लिम्प। So that was the first time I did, and that's how छोटी सी इंसिडेंट्स वो याद आ गई। तो मैं वो सुनाऊंगा जो आमतौर पे सुना नहीं गया। एक और हमने इसी का प्ले बनाया था महाभारत का, इन विच 40 of us, 40 artists went throughout India, and then we went abroad also, and we got standing ovations बहुत because same artists, हम लोग same costume, everything में we had made a play on महाभारत। सो हम लोग उसमें डॉक्टर राही ने एक जो उसके व्यथा लिखी थी कि वाई ही वॉज लाइक दैट, उसको उसका भांजा पूछता है, तो देन ही एक्सप्लेन्स कि क्या हुआ कि कैसे नहीं हुआ, तो वो बैकग्राउंड में जाते हैं कि क्यों ऐसा श्रूड था। सो ही सेज के बहुत दिन पहले की बात है भांजे, हम गांधार नगरी में रहते थे, मैं, मेरे पिताश्री गांधार नरेश और मेरी प्रिय बहन गांधारी, और हमारा जीवन बड़े सुखमय था, बड़े अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था कि एक दिन अचानक तुम्हारे पितामह गंगा पुत्र भीष्म वहां आ गए, और हमने उनसे पूछा कि आप किस सबब से आए, तो उन्होंने उत्तर जो दिया उससे मुझे बहुत ज्यादा एक त्रस्तता हुई, घृणा हुई, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन गांधारी का हाथ महाराज धृतराष्ट्र के लिए, तुम्हारे पिताश्री के लिए मांगा था। तो तब मुझे बड़ा क्रोध आया, और तो मैं चिल्ला उठा, नहीं गंगा पुत्र नहीं, ये तुमने क्या कह दिया, ये तुमने क्या कह दिया, तुमने मेरी प्रिय गांधारी का हाथ मांगा भी तो नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए मांगा, तुम्हें महाराज पांडु नहीं सूझे क्या? अरे मेरी बहन के जीवन में उसका चंद्रमा उदय हुआ तो क्या, और ना हुआ तो क्या, वो तो सदैव अंधकार में ही बंदी रहेगी ना। मैं जब जब राजभवन जाऊंगा, मैं जब जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल नयनी बहन को देखूंगा, तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा गंगा पुत्र, और तब मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश कर दूंगा हस्तिनापुर का, सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। तो यहां से वो उसको घृणा उत्पन्न हुई थी, तभी वो कौरवों का साइड लेता है, पांडवों के अगेंस्ट जाता है, अपने दुर्योधन को और सबको रॉन्ग टीचिंग देने लगता है, एंड दैट्स हाउ द कैरेक्टर कम्स टू दैट स्टेज जहाँ पर कि वो युद्ध भी करवाता है, महायुद्ध करवा देता है, द्यूत करवा देता है, हर चीज़ वो करवाता है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा मामाज को जाना है, दोस्त हु आर वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट, और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे मतलब बहन के बच्चों को तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये एक अजीब थी, मुझे याद आ गया, हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी नानी भी हमको ये कहा करती थी, ज़रा सी बिजली कड़कती थी बरसात के साथ, तो वो बोलती थी मामा के सामने मत जाना,
अब शगुन होता है, डोंट गो इन फ्रंट, चलो तुम दूसरे रूम में जाओ तुम। तो ये अब वो प्रथा पता नहीं क्यों बेचारे एक टारगेट बने हुए हैं हिस्टोरियंस के और राइटर्स के, कि मामा ही बेचारा हमेशा, और चाचा से ज़्यादा हमदर्दी होती है बिकॉज वो बाप के साइड का, में भी यही वजह होगी हिंदुस्तान में। तो